I'm Dr. Sagarika Mukherjee. I'm a consultant endocrinologist from Kolkata, practicing at Columbia Asia Hospital. आज मैं आपको बताऊंगी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में और कैसे इसके साथ डायबिटीज़ जुड़े हुए हैं. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इट्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर होता है. ये क्यों होता है? ओवरीज के ऊपर छोटा छोटा फॉलिकल्स आ जाता है. उस फॉलिकल से ज़्यादातर के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है एंड उसी से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करता है एंड देयर बाय यू डेवलप हाइपर एंड्रोजेनिज्म इन योर बॉडी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस कम्स इन फ्रॉम देयर. एंड बिकॉज ऑफ दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए ये सारा हाइपर एंड्रोजेनिज्म का सिम्टम्स आ जाता है. ताकि हर्सिटिज्म लाइक फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, इंक्रीज अमाउंट ऑफ बॉडी हेयर, acne on your face, on your back, and plus hormonal disturbances because of which people come to see the doctor. ये जो जिसका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है इसका और एक तो प्रॉब्लम आ जाता है ओबेसिटी. इवन लीन पीपल जिसका बॉडी वेट सही है उसका भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है अबाउट 15%, पर ज़्यादातर के 85% ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन वीमेन हैव गॉट ओबेसिटी रिलेटेड. एंड पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी इज रियली टू लूज वेट. वंस यू कम डाउन टू योर यूजुअल बॉडी वेट और योर टारगेट बॉडी वेट, तब ये पीरियड का प्रॉब्लम्स ठीक ठाक हो जाता है, हर्सिटिज्म ठीक ठाक हो जाता है. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम स्टार्ट होता है अराउंड द टाइम ऑफ मेनार्की, जब से पीरियड स्टार्ट होता है वीमेन को, एंड देन इट कंटिन्यूज अप टू मेनोपॉज. और इसका बिकॉज इट हैज़ गॉट इंसुलिन रेजिस्टेंस एज द सेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स की पैथोफिजियोलॉजी, डायबिटीज रियली गोज हैंड इन हैंड विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसका होता है, प्रेग्नेंट होने में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, और जो प्रेग्नेंट हो जाता है दे हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़, बिकॉज इनका इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो हार्मोन निकलता है प्लासेंटा से, दीज आर ऑल डायबिटोजेनिक हार्मोन्स. द हार्मोन्स कमिंग आउट फ्रॉम योर प्लासेंटल रियली promote or increase your blood sugar levels, and that can make you become have gestational diabetes. So you have to be very careful that if any women with polycystic ovarian syndrome becomes pregnant, have to be cautious about whether they are going to develop gestational diabetes or not. So their blood sugar level really should be tested from the first trimester itself, rather than waiting for the recommended 24 weeks testing for fasting and PP blood sugar. Okay. Now, once you have gestational diabetes in polycystic ovarian syndrome, you manage your gestational diabetes according to the set guidelines. You start with diet, and exercise will be of course limited capacity because of pregnancy. Start with the recommended diet with that amount of carbohydrate and protein allowance, and once if their blood sugar is not being controlled with diet, then they go on to insulin therapy. There is a lot of controversy whether metformin should be continued in pregnancy with women with polycystic ovarian syndrome, because metformin is used to treat polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian में metformin दिया जाता है साथ के इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाए. इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बॉडी में बिल्डअप होता है हाइपर एंड्रोजेनिज्म के लिए, वो metformin counteracts the insulin resistance and counteracts all the metabolic disorders or metabolic problem which associates with polycystic ovarian syndrome. So there is a controversy whether metformin can be used during pregnancy with polycystic ovary, but because it might affect the fetus, but you can continue up till the up to the first trimester, and can be used in the last trimester, but usually in the second trimester metformin is not recommended to be used. After your delivery, that is after the baby is delivered in polycystic ovarian women, the women has again a high chance of development of type 2 diabetes, even if your gestational diabetes gets corrected immediately after delivery. So you should be very much watchful of these women that काके इनका blood test हो पाए on a very regular interval basis. Usually it's recommended that after delivery, after a month, एक तो blood test करो. Then if it is normal, then do another blood test in 6 months time. If it is normal, ask them to do a yearly blood test at least for 5 years after delivery, so that you are not going to miss type 2 diabetes at all. जिस women को polycystic ovary syndrome होता है, and if polycystic ovarian disease is uncontrolled, if polycystic ovarian disease is uncontrolled, they have got high chance of development of type 2 diabetes even at the
अर्ली पार्ट, इवन एट अ वेरी वेरी यंग एज एज वेल। यंग एज में भी इनका टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, और जब इसका टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है, देन यू फॉलो द यूजुअल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू अवॉइड डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। आस्क देम टू फॉलो अ लाइफ लॉन्ग मेजर ऑफ लाइफस्टाइल interventions, things like stay on a very healthy diet, go on for a regular exercise, keep their weight under control, and make sure that their polycystic ovary is treated properly with metformin and maybe sometimes with hormonal requirements. And for all the cosmetic measures like hirsute, acne, etc., you can have cosmetic treatment like laser treatment or something. But at the end of the day it always remains, सबसे पहले इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस को टैकल करना है ताकि इनको टाइप 2 डायबिटीज़ लेटर ऑन में डेवलप ना हो। एंड फॉर दैट रीज़न यू हैव टू कंटिन्यू विथ द लाइफस्टाइल मेजर्स ऑन अ डे टू डे बेसिस। एंड द पेशेंट शुड बी एडुकेटेड, पेशेंट को सिखाना है, पेशेंट का फैमिली को भी सिखाना है। समटाइम्स दे गेट वेरी वरीड दैट व्हाट विल हैपन थ्रू प्रेगनेंसी, व्हाट विल हैपन इन लेटर लाइफ एट्सेट्रा। उनको भी सिखाना है, फैमिली को भी एडुकेट करना है कि इसका अगर वेट को कंट्रोल में आ जाए, इसका अगर हार्मोनल डिसबैलेंस को कंट्रोल किया जाए, देन दे कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ एंड दे मे नॉट, इट्स नॉट नेसेसरी, दे मे नॉट डेवलप डायबिटीज़ लेटर ऑन इन लाइफ।